सब साथियों ने सब दुखी हैं आईडी नीचे करो सब सब दुखी हैं इस बात से कि जिस तरीके से लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है और मिलजुल कर हम आगे कदम उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे राय मशवरा किया है, एलओपी ने सबसे राय मशवरा किया है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस तानाशाही के खिलाफ, इस लोकतंत्र के बचाने की मुहिम में हम सब साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। ये हमारा निर्णय। सर, राहुल गांधी को एविक्शन नोटिस आ गया है घर खाली करने के लिए, जो उनका हमेशा से एड्रेस रहा है 12 तुगलक लेन। माइक नीचे कर लो। घटियापन जो एक नफरत गोडसे वाली है भाजपा के दिल में, वो जहर सामने आ रहा है। अभी हमें नोटिस नहीं मिली, राहुल जी को जब नोटिस मिलेगी तो उसको वो प्रतिक्रिया देंगे। अभी मैं कैसे क्या कह सकता हूँ, जब नोटिस आएगी राहुल जी सर शिवसेना नहीं आई सर राहुल जी ने ये कहा कि मेरे ऊपर जो भी किया जा रहा है वो बहुत छोटी बात है, बड़ी बात है, मच बिगर इश्यूज है डेमोक्रेसी को लेकर के। मैंने शुरुआत यहीं से की। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, जिस तरह तानाशाही हो रही है, उससे लड़ने के लिए सारी 18 पार्टियां जो आई थी, एक मत है, एकजुट है। ये जनता की आवाज है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। 1 से 30 करोड़ भारतवासियों का जो धन अडानी के जेब में जा रहा है, तो लूटने वाला अगर गुनाहगार है तो लुटवाने वाला कम गुनाहगार नहीं। से जेपीसी की मांग हमारी जारी रहेगी। प्लस सब हो गई। I'll just summarize. I'll just summarize in English. Put down, थोड़ा नीचे It करो। was a very positive and a very substantive discussion on two major themes. One was the state of the Indian economy and the huge concentration of wealth in the hands of one particular industrialist close to Prime Minister Modi, Mr. Gautam Adani. And second is the state of Indian society and the state of Indian democracy, which is under attack, with all institutions being captured by the BJP and their RSS counterparts. Nonetheless, it was felt that it is important that we continue this mutual dialogue, and I think this is a step in the right direction. There will be more steps in the days to come, and I can say that from today's meeting, I can sense that this is the beginning of the end of the BJP RSS dictatorial rule that they have been using, and they have been the way they have been ruling in India for the past 6 Mr. Gogoi, Mr. Gandhi has been served notice to leave his residence, long-time residence, 12 Tughlaq Lane. Has he received the notice? Can you confirm this? Mr. Rahul Gandhi has always stated that the issue, no matter what step the government takes against him, he will continue to raise his voice to how the democracy is being attacked and subverted by the BJP and the RSS, and he will continue to press the question that where is the source of the 20,000 crore rupees in Adani Group shell companies. No matter what the government does, he will continue to ask these questions till we get an answer from Prime Minister. What's ahead from now, sir? What's ahead from now? I showed him this is the